सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयम् सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् बुल्बुलो हि न सर्वे देशेषु नस्तव कमदीयम् सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी स्वप्रहरेण सुवीरा सुसैनिकास्मदीया मदीया सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् क्रोडे च क्रीडरता नैत्यः सहस्रधाराः क्रोडे च क्रीडराता नद्यः सहस्रधारा शपुष्टप्राणैः शनिरैः स्वर्गमिदं मुदितमुदितम् सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् धर्मशमेन शिक्षा वैरितनो विधेया धर्मशमेन शिक्षा वैरितना विधेया हिन्दी वयं च स्वभूमिः भारतमस्मदीयं मदीयम् सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् बुल्बुलो हि न सर्वे देशेषु नस्तवकं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमं शिबिरगीतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अवधारणम्। अवधारणम सकारात्मक वाक्य अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंसेस अवधारणम। संस्कृतम अति सरला भाषा। संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भारतम समर्थ अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम।
सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आई डोंट नो ये बार बार क्यों आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, देर इज सम करेक्शन दैट आई हैव टू मेक। यहाँ पे कुछ शेयर स्क्रीन जैसा हो गया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ जूम ने अपडेट किया है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट अपडेट अबाउट। और सभी लोगों को क्लियर just a moment. Can you all wait for 1 minute, please? I will be back again. There are some issues I have to organize. Yeah, I'm sorry for the delay. Anyways, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? Please, you all are unmuted now. Can you all hear me? किसी ने क्रॉस डाला है। What does that mean? आपका माइक ऑन है सभी लोगों का? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का माइक ऑन है। हाँ हाँ, सौम्या, निधि, हाँ बताइए। हैंड रेज किया हुआ है। अनम्यूट सर आपने अभी किया था। ओ आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत ये होता है। एनीवेज, या जोगी। आवाज आ रही है। हाँ खुशबू सर तावक। सर वीडियो भी डिसेबल्ड है। हाँ सॉरी, सर वीडियो भी नहीं ऑन कर पा रहे हैं। आप तो नहीं कर पाओगे ऑन, आपको ऑन करना ही नहीं है। तो सर आप हम क्या कैमरे में नहीं होंगे? क्या जरूरत है? प्राइवेसी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं सर आई डोंट नहीं, नो। जरूरी नहीं वी है। आर वी आर इट हैज जनरली बीन क्लियरली इट हैज बीन क्लियरली सेड। आप अन्य क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, बट वी आर नॉट अलाउिंग वीडियो टू बी ऑन। ओनली ओके ऑन द लास्ट डे, जब ग्रुप ओके फोटोग्राफ लेंगे तभी सब ऑन करेंगे, बट नॉट इन ओके बिटवीन। देर इज अ प्राइवेसी रीजंस फॉर दैट। और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए आप मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। बोलना तो काम मेरा है। हाँ, प्रश्न जो भी पूछेंगे हमें सबको सुनाई देगा। तो ये क्या हो जाता है, और काफी लोग दे लॉग इन फ्रॉम द मोबाइल। तो मोबाइल से देर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट एज अ रिजल्ट लैगिंग शुरू हो जाता है। सारे सब लोगों के वीडियोस अगर ऑन हो जाएंगे तो तकलीफ होगी। नाउ वन मोर थिंग, आई विल मेक अ क्लियर कट अनाउंसमेंट दैट देर आर मोर देन 100 पीपल हु हैड रजिस्टर्ड. Those who have not attended this lecture, I will be removing them from the group. I want serious learners. I'm telling you very frankly. अगर देखते हैं, होता है, करता है, करेंगे, फ्री में तो है, देख लेंगे। आई डोंट वांट सच एटीट्यूड्स, प्लीज। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट सम थिंग्स। आप लोगों को भी, नए जितने भी हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे नो द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। और द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल टू एवरीबडी, क्योंकि हम सब साथ में मिलके पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज अ ग्रुप स्टडी।
So unnecessary questions, number one. Number two, don't start asking question in between. After I finish the point, I will be giving time for clearing it out. तो वो करना खुशबू प्लीज तारा क्रॉस केम काढी नाख तू प्लीज एक सरखो આવ્યા કરે છે તારો क्रॉस खुशबू. There is one more person who has already given that cross. That is distracting. Please, yeah, thank you. Now, प्रश्न पूछने के पहले raise your hands ताकि मैं आपका नाम अनाउंस करूं और उसके बाद आप लॉग इन करें. See, this will give a systematic learning system without wasting much of the time. At the same time, आवाज लोगों का आवाज नहीं होना चाहिए. So unmute your mic only and only when you want, when you are asked to. And as soon as you ask the question, switch off your mic. Please, let us go for a good discipline and a good class of learning. Now, basically coming to the point is, why do you all want to learn Sanskritam at the first place? एक एक करके कोई 5-6 आदमी जवाब देंगे, not all of them, please. New students, yeah, go ahead, Vandana. सर मेरे को स्कूल में संस्कृत अच्छे से समझ नहीं आई थी. And I always feel that I am missing out on something very important. Very important. So I can't blame my teacher. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे तो संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया गया था. तो ना कोई उसमें इंटरेस्टिंग पढ़ाया गया और हमें लगता था बस किसी तरह 8वीं खत्म हो और संस्कृत से पीछा छूटे. Now, Vandana, I tell you, the formation of the syllabus is in a wrong way. You can't blame the teachers. Number one, even Yes, I have sir, I studied in a understand. convent school. मैं भी convent school में पढ़ा हूँ. मेरे लिए तो संस्कृत था ही नहीं. So schooling days, I don't have that experience. But yes, I visit quite often. I am visiting the schools and all that, and I find it कि रामे रामो रामः प्रथमा ऐसे ग्रामर से कौन पढ़ता है भाई? You have learned your mother tongue. तो आपके घर के पेरेंट्स आपके सामने ग्रामर की बुक लेके बैठे थे आपको पढ़ाने के पहले? साधारण वाक्य से ही आप समझ में आएगा. एंड एज यू ग्रो अप यू विल पिक अप द ग्रामर. दैट इज नेचुरल प्रोसेस. आई विल टॉक ओवर इट. थैंक यू वंदना. या शालिनी. नमस्कारम सर. हाँ वंदना, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए. हाँ. I started learning Bhagavad Gita and other shlokas, and I fall in love with the way that sounds. And whenever I chant, the energy levels are rising and like it. So I wanted to, I became more interested in Sanskrit. So yeah, I wanted to learn that. Uttamam, I will answer you. Yeah, Swami. Hema Malini Swami. No, I don't want. Mute किया है अपना. No, you have unmute. You have. Sorry. मैंने म्यूट कर लिया है अपने आप को. तो बोल कैसे सकते हैं? मैं सुन कैसे सकता हूँ? आपने म्यूट किया तो. You want to talk something? No, I don't want to say something. Okay. I am switching it off. Don't worry. Yeah, Rita. या नमस्कारम सर. नमस्कारम. बहुत दिन से सीखना था, पर जैसे आपने बोला ग्रामर से डर लगता था. अभी भी स्कूल में भी लगता था और अभी भी लगता था, इसलिए. बट व्हेन आई लेकिन अभी लगता था, अभी डिसाइड मत करो ना. ओके. वर्कशॉप पे करो. व्हेन आई सॉ योर वीडियोस ऑन YouTube, so it gave me a confidence कि नहीं अभी सीख सकती हूँ संस्कृत. That is, this is the best. Thank you very much, and we will talk over that. Okay. Yes. Thank you. या क्या है RVSHE? आप कोड नंबर से आपको घर पे भी पुकारते हैं? ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. हरि ओम. हाँ जी. गुरुजी, मैं एक्चुअली 8-9 भाषा आती है मेरे को. हाँ. तो मैं एक्चुअली मार्केटिंग में था, तो आई हैव चेंज्ड माय प्रोफेशन ड्यूरिंग दिस कोरोना टू दिस टेंपल. नाउ आई एम प्रीस्ट. तो प्रीस्ट होने के बाद हमको संस्कृत सीखना ही है. सो आई एम वेरी मच वेरी ईगर टू लर्न, पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. नहीं, उत्तम. गॉट द गुड प्लेटफॉर्म. या डोंट वरी, आपका पर्पस क्लियर होगा. एंड ये कोड नंबर, आपका नाम तो बताएंगे? मेरा नाम है रमेश शेंबेकर. रमेश महोदय. बरं चालेल. चला, आता आपण महाराष्ट्रीयनच आहात का की कर्नाटकचे? हो साहेब. हा, कोकणातले का? असतो. हा, असतो. आपण भेटूया, आपण बोलूया त्याबद्दल. या एनीबडी एल्स प्लीज म्यूट करा. हा, या नमो नमः बेचा.
नमो नमः। आरती। आ गई। आरती को बोलने की जरूरत नहीं है भाई, तेरी आवाज ही काफी नहीं, है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं आ गई हूँ, मैंने आ ज्वाइन गई, कर लिया। हाँ ज्वाइन कर दिया, उत्तम। अन्य लोगों से इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये आरती हमारी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वेरी फेमस। जो आवाजें आप सुनते हो, ट्रांसलेटर है, और काफी कार्टून मूवीज वगैरह होते हैं या अन्य मूवीज में भी ये अपना वॉइस देती है या कैरेक्टर को। एंड शी इज अ वेल नोन पर्सनालिटी बाय हरसेल्फ। तो आरती आते ही, क्योंकि वो उसको मैंने एक रूल बनाया कि जब भी आओगे तो आप माइक ऑन करके अटेंडेंस दोगी, बिकॉज थोड़ी सी आलसी है वो। हाँ, एनीवेज, या एनीबडी एल्स प्लीज, या गो हेड, स्मिता गांधी। स्मिता बेन, Namaskaram, नमस्कारम Guruji. नमस्कारम It's नमस्कारम। nice to be back, but I have started work, so now sometimes if I miss, can I watch it on YouTube? Yeah, absolutely, absolutely. Like today also, I have an appointment for work after 4 o'clock, so maybe I'll watch it on the... That is not a problem. See, you can catch up because you are an old student, you can catch up. But those who are catching up from the YouTube, if you all have any questions, अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो और अगर आपको सवाल है, या you are attending live, and later on when you are seeing the recording, you have some doubts. The doubts has to be cleared by messaging me. Okay, fine. On the same आप number. मैसेज करोगे on the same number, but the message should not be written. It should be spoken. The reason is कि spelling mistake जरा भी हो गया है, we cannot, I cannot understand and I would misunderstand. There might be case your question might be very important for others also. So in such case, I will just answer you. I will answer in the class. Okay, fine. Okay. So let others also know about it. And this is a group study. Right. Why we want participation is, everything is not what Guru says. There are doubts. We are logical people. So let us learn a logical language in a logical way. Perfect. Oh, perfect. हाँ, तर्क जिसमें है, ये भाषा में तर्क है, और तर्क होता है तो शास्त्र होता है। तो अगर हमें शास्त्र सीखना है तो हमें तर्क के माध्यम से जाना पड़ेगा, और तर्क प्रश्नों से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा से उत्पन्न होती है प्रश्न। तो आई वेलकम क्वेश्चंस। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। नमो नमः झरना। अन्यत सर्वे, सभी लोगों को नमस्कार। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। एनीबडी हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस? स्मिता जरा माइक ऑफ करेंगे प्लीज। नमो नमः महोदय। नमो नमः। हाँ, नमो नमः। या विशालक्षी, या धन्यवाद। Today my health is not well, having fever, so I left the... you just listen, okay? हाँ यार, सूद आपको कुछ पूछना है, पूछिए। अच्छा, चलूं मैं आगे? I left the class, no. Tomorrow onwards I will join. Okay. Please switch off your mic. नमो नमः गुरुजी। नमो नमः महोदय। गुरुजी, मैं प्रफुल्ल, आपका पुराना स्टूडेंट और आरती का फ्रेंड। आई एम अ सिंगर एंड वॉइस। I know प्रफुल्ल। welcome again and really excited to see you प्रफुल्ल। और I tell you very frankly, आप नमो नमः बोले ना, तभी मुझे किधर डाउट गया कि अरे ये अपने ही स्टूडेंट है कोई। तो वो एक थोड़ा ये हुआ, और जैसे ही आपने प्रफुल्ल बोला तभी मुझे याद आया कि हाँ यार, अपने आरती के फ्रेंड है। ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एंड काफी अच्छे लोग हैं, एंड दे आर एक्साइटिंग मी अ लॉट। क्योंकि कल आरती ने अचानक से मुझे एक अपना वॉइस ओवर भेज दिया, एंड रात को 1:30 बजे। मैं बोला ये जाग रही है, सब लोग अभी तक वेदशाला से जुड़े हुए हैं। बहुत आनंद हुआ। प्रफुल्ल जी प्लीज अभी कॉन्सेंट्रेट करके आप करेंगे प्लीज। श्योर। अभी आप बहुत ही चेंजेस आ गए हैं, हमारे पुराने स्टाइल में अब स्लाइड्स वगैरह नहीं चलेंगे। मोर इंटरएक्टिव एंड ऑल दैट। तो हम लोग ऑनलाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चला रहे हैं, OBS के माध्यम से। तो पूरा एक इंटरएक्टिव रहेगा। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंटर्स, व्हाई संस्कृतम। तो काफी लोगों ने बोला, somebody said they want to learn Srimad Bhagavad Gita, Ved, Puran, Upanishad, Ramayanam in the original Sanskrit form. So I want to learn Sanskritam. See, first I'm making it very clear
कि संस्कृतम इज नॉट ओनली द टेक्स्ट लैंग्वेज. संस्कृत केवल लिखित भाषा नहीं है. लेखन में अगर आपको आनंद मिलता है, इफ यू आर फाइंडिंग द वाइब्रेशन और द ब्यूटी इन द रिटन टेक्स्ट व्हेन यू आर रीडिंग इट, जस्ट इमेजिन द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, the moment you start using it in your day-to-day conversation, what it can change your own personality. यानी संस्कृत जो शब्द है, ये भाषा है, ये भाषा बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस से बनी हुई है. हालांकि means it is very logical language, I mean to say. In between, I will be converting into English, as well as I will be switching over, translating each and every sentence as far as possible. But in case you don't understand, please ask me. Okay, in a flow of lecture, sometimes you miss to translate. And if you don't understand, raise your hand. Sir, please explain in English again. I will explain. No issues. Now, condition number one is, I am not your Guruji. I am not your Guruji. See, the things have happened in a very beautiful manner. Everybody attending this lecture wanted to learn Sanskrit for some reason or the other. यानी आप जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के दिल में संस्कृत के बारे में कुछ ना कुछ कनेक्शन था. एटर्नल कनेक्शन, आत्मन कनेक्शन था आपके साथ. देयर वाज सम कनेक्टिविटी विच वाज फॉर्म्ड. मां सरस्वती ने आपकी रिक्वेस्ट सुनी. शी हर्ड योर रिक्वेस्ट एंड शी हैज रिटन अ पोस्ट कार्ड इन योर नेम. And as a postman, through WhatsApp, I have delivered to you all. And there are other ways that you got the messages. ये सारे लिंक जो है वो एक पोस्टमैन है. So I am just a postman. Whenever I am starting with a lecture, believe me, I am telling you, when the topics will start, जब इस विषय शुरू होगा, तभी आप बिलीव कीजिए, ये हकीकत है कि मेरी केवल आवाज और मेरा शरीर यूज हो रहा है. कोई शक्ति है जो आपको पढ़ा रही है. मेरा संस्कृत के साथ पहला संपर्क 2016 में हुआ है. ओनली इन 2016 आई हैड माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद संस्कृतम. सो आई एम नॉट दैट जीनियस टू बी कॉल्ड गुरुजी एंड ऑल दैट. एंड आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, संस्कृत डज नॉट सपोर्ट ईगो. Sanskrit does not respect the people who have ego. यानी जिसको अभिमान होता है ना, उसके साथ कभी संस्कृत नहीं होता. अभिमानी लोगों के साथ भी संस्कृत कभी नहीं जुड़ेगा. Whenever a egoistic person is saying a simple sentence in Sanskritam, he will not pronounce it in a right way. He must be a vidwan. But even then, because of his ego, he is controlling some vibrations. And this is the language full of vibration. आगे जाके पढ़ेंगे, हम वर्णमाला लेने वाले हैं. So our lectures will go on. I am making it quite short. The introduction is because most of them must have gone through the videos. Go through the videos. Subscribe to the YouTube channel, not for monetization. Monetization at present मैंने किया भी नहीं है. I have not done monetization at all. And even if I am forced to do that, very frankly, I tell you, the money is not for Arjun Vyas or his family. There are donations that come after the lectures and all that. We do post a donation link and all that, but that money goes to a Gaushala. There are number of small Gaushalas. छोटी छोटी गौशालाएं होती है, उसमें वो मानधन जाता है. अर्जुन व्यास या उसके परिवार का कोई भी सदस्य संस्कृत के माध्यम से अन्न का एक दाना भी नहीं खाता. Not at all. So there are some things that we have principles, and I am proud to say कि गत वर्ष मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ मेरा, एंड मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जनरेट किया. एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, संस्कृत कैटेगरी में सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. संस्कृत कैटेगरी में किसी ने अटेम्प्ट तक नहीं किया था.
और वो सौभाग्य मां सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद रूप दिए। क्यों दिया? क्योंकि बिना कोई इंटेंशन हम ये निरंतर वर्ग चला रहे हैं। एवरी मंथ देर इज अ लेक्चर, एवरी मंथ देर इज अ लेक्चर। आई हैड सफर्ड हार्ट अटैक लास्ट ईयर, आई वॉज बाईपास, ऑपरेशन हुआ था। इवन दैट मंथ माई वाइफ टुक द लेक्चर, वो मंथ भी मिस नहीं हुआ था। देर आर स्टूडेंट्स हु आर प्रेइंग टुगेदर, या पूरा ग्रुप बना के बैठे थे उन्होंने, और मेरे ऑपरेशन के दिन देर वर प्रेयर्स दैट वर गोइंग ऑन, एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, ऑपरेशन थिएटर में देर वर अदर सर्जन्स हु वर आवर स्टूडेंट। वो अपने वेदशाला के स्टूडेंट थे, वो अटेंड करिए ऑपरेशन, बोलते हमारे सर है। तो आई एम देयर। They are surgeons, doctors, we have engineers, and very secretly I am telling you, there are people even from ISRO who are attending regularly. They are attending night batch, but yes, they are there. But I am unable to announce their names. They have told me not to announce their names. तो काफी ये रहती है. And apart from that, why so? Why they are inclined towards Sanskritam? Now coming to the facts. Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, Ramayanam, they are written in literature language. यानी ये जितने भी हमारे ग्रंथ है, ये साहित्यिक भाषा में लिखी गई है। और साहित्यिक भाषा, आप डायरेक्ट साहित्यिक भाषा को कैसे समझ पाओगे? Will you ever understand directly the literature without knowing the language, the basic language? So the first step is द स्पोकन लैंग्वेज, बोली भाषा। यह सबसे पहला कदम है। आपको संस्कृत में बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक इन संस्कृत, तो ही आप वो साहित्यिक भाषा को समझ पाओगे। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द लिटरेचर लैंग्वेज। You don't sit in this, children are, when they learn, when you all have learned your mother tongue, we all, rather, not you all, we all have learned our mother tongue. Did our parents and grandparents sit in front of us with a grammar book? No. The grammar came in our life, in our mother tongue, much later. काफी टाइम बाद में आया था। पहले हमने शब्द सुना। So those who are attending these lectures first time, I am requesting them, you have to repeat again and again. Don't expect that within this 10-12 days I will be able to start talking in Sanskritam. No. The reason is because Sanskrit is not a social language. Sanskritena Sanskritam pathayatu. There are people, there are institutes who say, teach Sanskrit in Sanskrit language. Yes, I respect. Why? Because English is taught in English, Marathi is taught in Marathi, Kannada is taught in Kannada, Tamil is taught in Tamil, Telugu is taught in Telugu. Hindi में पढ़ाते हैं. तो संस्कृतेन संस्कृतम पाठयतु. Yes, I accept. But tell me one thing, is Sanskrit as on today the social language? ये कोई सामाजिक भाषा है आज की तारीख में? आज से 300 साल पहले था. 300 years ago, yes, it was a social language. But as on today, is it a social language? No. So for many of us, you are interested into learning Sanskritam, but you want comfort of understanding in your own local language. Am I right? मेरा 3 साल का लड़का है. Without any attempt, nobody speaks in Hindi with him. But because Hindi is a social language, he is going in nursery and all that, he is traveling in the school bus and all that, he has started picking up Hindi words. Because it is a social language. But as I and my wife talk in Sanskrit only, he has also started picking up Sanskrit words. Because he is hearing it. So the process of learning is Pratham Shibiram, yani your first workshop is only listening. Because new words are going to come in. Let it come. आने दीजिए. नए नए शब्द कर्ण में गिर रहे. आने दीजिए. One thing I tell you. आने के वक्त
जिन जिन लोगों को संस्कृत का पूर्व ज्ञान है, those who know Sanskrit before, many of them I have seen, they have attended Sanskrit 10 days workshop of many institutes, but their syllabus might be different. I am not concerned. Our Vedshala syllabus is totally based on human psychology, because I am a doctor by profession. Anyways, I would like to introduce my name as well. I am Arjun Vyas. So I forgot to give my name introduction. So here it is. So now I tell you, I am a doctor also. So I don't, if I have to teach logically, I have to understand what is the process of language learning. It is a skill. At what age can you learn? The results were that you can learn any language at any age. But especially Sanskritam, you can pick up very fast. The reason is if it is taught logically, because it is a very logical language, it has to go and process in a logical manner. So if you are having any blocks, पहले का अगर आपका जो सोच आपको अगर नए चीजों के लिए अटका रही है, तो आप भाषा नहीं बोल पाओगे. I have seen PhDs. Head of the department of Sanskrit, department of various university. You talk in Sanskrit with them, they answer with a shlok. But what does that mean here? That shlok is sometimes not relevant also to your question. But just to show that I am talking in Sanskrit does not mean that you have to talk in a shlok. How are you? Bhavan katham asti? You can reply with me with a shlok. You have to just reply, Samichinam asmi. I am fine. That's it. Finish. लेकिन बहुत सारे लोग, यानी मैं कहता हूं, संभाषणेन विना संस्कृत तज्ञ न शोभते. Without normal speaking, communication, a Sanskrit expert, और विदुषी जिसे कहते हैं expert in Sanskrit, does not suit. You will never ever understand. You have to mug up grammar. Is grammar a subject to mug up or to understand? व्याकरण ये कंठस्थ करने की चीज है या उसे समझने की चीज है? यहां पे हम मिस्टेक करते हैं, बिकॉज हमारा एकेडमिक जो हमारी शालीय सिस्टम हुई है उसने आपको तोता बनाया है. बाय द वे, आई विल शेयर अ स्मॉल थिंग विथ यू ऑल. एक स्टोरी है. एक कुटिया थी, स्मॉल हट देयर वाज, एंड देयर वाज वन ओल्ड मैन. एक आदमी था, वहां पे रहता था, उम्र था, उनकी उम्र थी, एंड ही यूज्ड टू डू नथिंग, ओनली राम नाम जपम. राम 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 कंटिन्यूस. व्हेनेवर ही वाज अवेक, राम नाम का जप करता था. खाना खाते वक्त भी राम राम करके खाना खाता थे. ही यूज्ड टू ईट हिज फूड, स्लीप. As soon as he gets up, again Ram, 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 Ram. So he was all alone, अकेला था. So उन्होंने एक तोता पाला. So he had, had a pet of cage parrot. He had kept for, companionship. So even hearing his master, the parrot also started saying Ram, 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 Ram. So it was the influence of the master. So he was continuously talking not anything else but only Ram, 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 Ram. So accordingly the parrot also started reciting Ram, 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 Ram. One day it so happened, एक दिन ऐसे हुआ क्या by chance, by accident, दोनों एक साथ गुजर गए. Both died at the same time. Maybe some coincidence, I would say. So both died at the same time, and both went to the Swargalok in the office of C.H. Gupta. Mr. C.H. Gupta, पता है ना Mr. C.H. Gupta? भारती गुप्ता, आपको पता होगा C.H. Gupta कौन है? हाँ, भारती गुप्ता. हाँ, या वंदना. चित्रगुप्त. हाँ, चित्रगुप्त. गुप्ता कौन है? हाँ, C.H. गुप्ता यानी चित्रगुप्त. ओके. तो हम इसे मिस्टर C.H. गुप्ता कहते हैं. तो YM राज इज यम राज.
हाँ, सो मिस्टर वाई एम राज मीन्स यमराज, तो ये मिस्टर चित्रगुप्त के ऑफिस में गए, उन्होंने बुक्स निकाले, अकाउंट्स देखा, ही स्टार्टेड स्टडीइंग देयर अकाउंट्स एंड ही सेड टू दैट ओल्ड मैन स्वर्गलोक। फिर पैरेट को बोला अगेन बैक टू द अर्थ, वापिस आप पुनर्जन्म लोगे। बोलता है उनको मोक्ष दिया, मुझे नहीं। उन्होंने जितने बार राम नाम का जप किया, इवन आई डिड द सेम, सो यू गेव मोक्षम टू हिम बिकॉज ऑफ हिज राम नाम जपम, इवन आई डिड माई राम नाम जपम। He said you did not do it by your heart and soul, he did by heart and soul, and you just copied him. That was what was the conclusion of the story? I promise you, Arjun Vyas promises you, I will not make you parrots. मैं आपको तोता नहीं बनाऊंगा। Am I clear? But then follow the systems. There is a system of learning, और वो लर्निंग की सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। You have taken up a mission, और वो मिशन ये है, संकल्प आपका ये होना चाहिए कि अगले साल तक, by end of 2025, I will be fluently talking in Sanskritam. Fluently talking in Sanskritam. यानी अगर कोई कहे कि मुझे 80 भाषा आती है, तो आप केवल एक सवाल पूछोगे, आपको संस्कृत आती है? क्योंकि मुझे संस्कृत आती है जो पूरे विश्व की हर भाषा की जननी है। Am I right? She is mother of the all languages. If a person comes in front of you and says, I know 80 languages, you should ask him, do you know Sanskritam? I know Sanskritam, which is mother of all the languages. So I am always one plus. Excuse me. Yeah. If Sanskrit is mother of all languages, who is the father of all languages? Who is the father and mother of Shiva? Sima? I Shiva. don't know Sima. Shiva. Shiv. शंकर। हाँ, शिव शंकर, वो तो स्वयंभू है। हाँ, बस। Got your answer? Yes, yes. ठीक। Does everything need a couple? Swami? नहीं। I can test you. That what is thinking? You are not wrong. You are not wrong. That is how our brain has been programmed over the time. सही कह रहे हैं। ये प्रोग्राम हो गया है, दिमाग हमारा प्रोग्राम हो गया है। We have not understood what is energy science. When we say mother does not literally mean a mother. Mother means person who is creator. नहीं, एक सेकेंड, हेमा, टेल मी वन थिंग, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई टेल यू, और आपको सवाल पूछने का अधिकार है। आई एम नॉट म्यूटिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ सिंबल ऑफ अ मदर? हु इज अ मदर? द चाइल्ड मेक्स अ मदर, द मदर डज नॉट मेक अ चाइल्ड। जब यानी जननी, the creator is symbolized as mother. Am I right? बिल्कुल सही। तो वो एक एंगल भी रखिए ना, तो उसमें फादर की जरूरत नहीं है ना प्रकृति में। हाँ, नहीं। नहीं, किसी और को बताने के लिए आपसे हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, दिस इज जनरल टॉक एंड कम ऑन यार हेमा, इवन आई हैड सच क्वेश्चंस यार अर्लियर। इट इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, there is no problem. It was not anything stupid, I am telling you. It was very intelligent question. And there are people who are going to argue on this point, isn't it? ठीक है सर, ओके सर। वो आर्ग्यू करेंगे, अरे फादर कौन है? अरे यू जननी, मदर इज व्हाट अ चाइल्ड मेक्स अ मदर. The mother doesn't make a child. When a child is born, he makes that lady a mother, isn't it? It is a superb line I am telling you. So let us go ahead. So when you are conversant with our Sanskritam, that changes lot of things. Now we are going to learn Varnamala. After Varnamala, I am going to connect that whole thing
as a science. So because science is a logical language, arithmetic is a logical language. Similarly, as we say in Sanskrit, why it is logical language? Because it is based on fixed principles. There are logic of everything that is applied in Sanskrit. How the word is formed, how are they created, but we are not going to go into that details. हमें यहाँ पे टारगेट है कि ये शिविर में हम केवल नए शब्दों को समझेंगे, छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना शुरू करेंगे. Am I clear? One of our participant is over here with us, Khushbu Jogi. She, I think so, for her, Vedshala was the first step for Sanskritam, I think so. Jogi, Khushbu, jara mic on kar. Huh? Vedshala was your first step in Sanskritam? Yes, sir. And go in the YouTube, she has written her whole own song in Sanskritam. She can. And she did. It is there posted in our this thing, YouTube. So, ye creativity, it is how you are taking up, and I know her. And she, I will be telling you all about one of the challenge that she has fulfilled later on. जो चैलेंज दिया था वो चैलेंज उसने बहुत बेखूबी उसने ये किया. Okay, so we are proceeding with our main lecture. Now with one more announcement is, from this Dasera, there will be a message that will come into this group. From the Dasera onwards, the day of Dasera, we are starting Bal Sanskar Varg for children between the age of 6 till 16. Am I clear? 6 to 16, Bal Sanskar, where there will be shlok, there will be small sentence formations, and what are the meanings of that. They will be at a lower level. These classes are quite, sentence formations are quite at a matured level. So we are reducing at a child level, and those classes will be taken. One of the teacher is Khushbu. She will be taking, it will be a weekly class every Saturday only for 1 hour. So from this Dashera, so the announcement will be made, and those who are interested have to register on Dasera, not later on, because on Dasera there will be a pujanam. We will have that book. You will be told you have to take a notebook and you have to do the puja. And there will be a Purohit who will be guiding you on the Zoom how to do your puja, and all the videos will be on that day. Clear? छोटे बच्चे अगर पूजा नहीं कर सकते तो बड़े उनके साथ बैठेंगे. शुरू करते हैं ना. कुछ माहौल चेंज करना है या खाली हमने हिंदुत्व और सनातन के बारे में एसएमएस करना है फॉरवर्ड, या हमें कुछ करना है? Sir, can I ask one thing, sir? Yes, Gauri, all the rights. Yeah, अभी आपने बोला कि ये जो सिर्फ बच्चों लोगों के लिए है, बट अभी बच्चों से ही हम कुछ सीखते हैं कैसी भाषा करना है वगैरह, तो can I also join? So sweet, Gauri. Yeah, you can. Because so to make some sentence, you have to learn little bit. No, I tell you. नहीं, sir. You can go ahead. There is no problem. You all can. Yeah. नहीं गौरी, आप अटेंड करो. हाँ, बड़े भी करेंगे, बड़े भी कर सकते हैं. क्योंकि क्या है, बच्चे लोग छोटे छोटे सुन के भाषा बोल सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग, मैं थोड़ा सुन के मेरा एक सेंटेंस बना सकूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा. गौरी, मैं तुझे बोलूं, 2 लोगों ने चैलेंज पूरा किया था, विच आई हैड अनाउंस लास्ट टाइम. उसमें से एक खुशबू जोगी थी, दूसरे एक हमारे श्री लक्ष्मी करके थे. नाउ यू विल बी द 3rd पर्सन आई अनाउंस यू. चलो. Oh, thank you, sir. You have that capacity. You have that fire in you. I really want to do that. You will do it. You will do it, Gauri. Okay, No worries. Thank you, sir. Okay, Thank you. Fine. Now coming to our point is, सबसे पहले आज हम लेक्चर जो है अपने टू द पॉइंट जाते हैं, and we are coming to Varnamala. Shall we start our lectures, or anybody has any questions regarding how the proceedings will be? The lectures, I want to wind up the lecture as fast as early as possible without wasting any extra days. The reason is, okay, immediately the
Navratri will start, and there are many other commitment of many ladies during Navratri. After Navratri, immediately our class will also start. Dasera will be the day of our this small children work, Bal Sanskar work, and the following Monday will be the next same batch again. The same thing will be taught, nothing else, but then you all have to repeat. ओके सभी लोगों को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने बार रिपीट करोगे योर थिंग्स, द स्लाइड्स विल नॉट चेंज, बट दैट विल इनकॉर्पोरेट इनटू योर माइंड. वो आपके दिमाग में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड पे आएगा, और आप बोलना और सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए आसान होगा. इट विल बिकम इजियर. शैल वी मूव अहेड? डू यू ऑल परमिट मी टू डू दैट? Yes, sir. Yes, sir. आज्ञा अस्ति वा? आज्ञां ददातु. अस्तु, अग्रे गच्छामः. So first we are going to talk about is the alphabetical chain. Varnamala. Varnamala means alphabetical chain. Varnamala. Varnamala means, Varna means alphabet, Mala means chain. Varnamala. Now, if you have observed, our every Devanagari slide has IAST script, that is Romanization of Sanskrit alphabets, Devanagari alphabets. So, Devanagari is a language in which Sanskrit, Nepali, Marathi and Hindi are the four major languages which are 100% under the category of Devanagari. Okay, so these are the four languages, but there are other regions where Devanagari is not that common, especially out of India. The foreigners or foreign origin children or youngsters, they are unaware about Devanagari. So in last century, this new script had come up, but this script was not popularized. उसके बहुत ज़्यादा ये घोषणाएं या उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था. इसका सबसे पहला प्रचार प्रसार शुरू किया इस्कॉन ने. इस्कॉन ने संस्कृत के श्लोक को वो नीचे रोमनाइजेशन में जो लिखते थे वो था IAST स्क्रिप्ट. IAST का मतलब होता है इंटरनेशनल अल्फाबेट्स फॉर संस्कृत ट्रांसलिटरेशन, यानी उच्चारण को आपको ये करना है. वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट एज वेल एट अ इनिशियल स्टेज, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सभी लोगों को मैंने IAST के 3 वीडियोस की लिंक भेजी है. And thereafter, there is a link also of downloading and PDF file. तो 2 पन्ने की PDF फाइल है. You can take the printout of that and start. Those who are unaware about Devanagari, means in other words, I personally believe, and Vedshala has a very strong this thing, निश्चय, संकल्प जिसे कहते हैं, कि the limitation of not knowing Devanagari cannot stop you from learning Sanskritam. If there is a problem about Devanagari, no problem. There is a solution. And what is that solution? IAST means Romanization or Latinization of Sanskrit alphabets, Devanagari alphabets. Am I clear? So you will find this thing. Now coming to our Varnamala. Varnamala is alphabetical chain. अन्य भाषा सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो भाषा में भी वर्णमाला होती है. ये एक ये होता. बट हियर द स्पेशलिटी इज द साउंड. सो व्हाट एक्चुअली इज द साउंड, व्हाट इज क्रिएटेड इज अल्फाबेट्स. बट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड को निकालने के लिए आपको एक तरीके का आवाज निकालने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए? एक चिन्ह चाहिए. एक चिन्ह चाहिए. यू नीड अ सिंबल टू इंडिकेट द साउंड. एम आई राइट? आप समझ रहे हैं? दैट सिंबल इज अल्फाबेट. फॉर एग्जाम्पल, आपने ए देखा, तो मैं अगर देखूंगा तो भी आई विल प्रोनाउंस ए. यू ऑल्सो सी, यू विल प्रोनाउंस ए. somebody else will also see, he will also pronounce A. Am I right? Because that is the symbol of that sound. So what are alphabets? Alphabets are the symbol of sound. ये आवाज के लिए एक चिन्ह है. आवाज का चिन्ह का प्रतिनिधित्व वर्ण करता है. स्पष्टम वा?
तो इसका साउंड सही होना बहुत जरूरी है. So when this Varnamala, broadly there are set of alphabets. Abhi set of alphabets were very different when in Vedic Sanskritam. When Vedic Sanskritam came, it is anticipated, ज़्यादा details पता नहीं है, but they say roughly around 250 say 260 alphabets थे. There were 250 to 260 alphabets depending upon the sound that is to be created. Quite difficult for a person to memorize it. किसी को दिमाग में रखने के लिए वो काफी दिक्कत होती थी. लेकिन Vedic people had that culture and that was the only language, so they could master it. We, as on modern time, आज के आधुनिक जमाने में बहुत सारे भाषाओं से घिरे हुए हैं. We are surrounded by many languages. So due to that, this other languages also influence you. As a result, to memorize 256 alphabets was a difficult task. So they came down with the alphabet and they landed up with around 156. They removed around 100 of them. 100 alphabet को निकाल दिए, replace किए with another sound, because sound has to be replaced. And as a result, they came up with a different set, which was 156. That was also a huge number. So later on, Devanagari came into the existence. Now, Devanagari is influenced by Vedic alphabets also. There are some sound and there are some symbols, means alphabets, which have derived from the Vedic thing. But this has come as a Devanagari to make it easier, and as a result, the main important 56 alphabet set was created, which was very easy for a human being to understand. Now, what they actually did, I will be showing throughout the whole process of understanding Varnamala. जब भी हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो अभी एक्चुअली 56 में इतना वेरिएशन कैसे लेकर आए उसका आपको एक सीक्रेट पता चलेगा. So in every language, the alphabetical chain is divided into two major components. Like Varnamala is divided into two major components. First is Swaraha. Swaraha means vowels. Swaraha means vowels. Shamyatam, मुझे इसे म्यूट करना है क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स को फोन आते हैं. बोलिए, तो क्या उन लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं है. Now, the first set in Varnamala are set of alphabets which are Swaraha. Swaraha means vowels. यानी स्वराहा हम अन्य भाषा में जानते हैं क्योंकि सभी भाषा में स्वराहा रहता है. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वॉवेल्स. सो एवरी अदर लैंग्वेज also have a set of vowels. So, but reasons might be different or the use of vowel might be different. But in Sanskrit there is a system. So whatever now I am talking is only related to Sanskritam. Am I clear? So Varnamala means alphabetical chain. The first category is Swaraha. And the second category is Vyanjanani, means consonants. Swaraha and consonants. So there are two sets. There are alphabets which fall under vowel category and other set of alphabets which fall under Vyanjanani, means Vyanjanam. So Vyanjanam. So it is called consonants. So now let us first take the first category, and that is Swaraha. Okay, Swaraha means vowels. What are vowels? For vowel, there is one sutra, means there is one shlok. They say, Swa Rajante. Swa Rajante te Swaraha. Swa Rajante te Swaraha. Am I clear? Swa Rajante te Swaraha. Those alphabets which are independent by itself, which are complete by itself, they fall under the category of Swaraha.
So does that mean there are alphabets which are incomplete or half or anything? Yes, we will see later. उसको बाद में देखेंगे. Now let us go step by step. So swaraha, these are swarajante, means which are independent by itself, complete by itself. Swarajante are coming under the category of vowels. Swarajante te swaraha. Now in that alphabets, which are the alphabets that they come? We are very commonly known that are vowels. Swaraha. Swaraha first category I would put said a, a, I, u, ru, rlu. A. Now sound a, I, u, ru, rlu. This yellow alphabet rlu is hardly used. In spoken Sanskritam, there is only one word, and that is rlu itself. That means earth, prithvi. Prithvi ko rlu kaha jata hai. So in spoken Sanskritam you don't find this, but the sound comes from the Vedic Sanskritam. So rlu and dirgha rlu is commonly used in stotram. Yeah, Vandana, vadatu. सर ए नहीं है. हाँ, आ ई उ ए. अच्छा वंदना जी, टेल मी वन थिंग. आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप राजधानी के आगे दौड़ेंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे, कि राजधानी में बैठेंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे? हाँ भगिनी. जी सर, बैठेंगे. तो आप गाड़ी के आगे मत दौड़िए ना, आएगा ना. अच्छा, ओके सर. ये आपके माइंड को ट्रेन करने की बात है. नहीं वंदना जी, आपको मैं नहीं बोल रहा हूं. आपका कंधे पे बंदूक रख के मैं अन्य पे गोली मार रहा हूं. देयर आर मेनी अदर्स जिनके दिमाग में भी यही सवाल था. जो स्क्रीन पे दिखता है पहले उसे तो समझो. नहीं सर, इसमें ये तो नहीं डाला, इसमें ये तो नहीं किया, सर को नहीं आता है, सर तो कॉन्वेंट मीडियम के हैं, ऐसे ही नहीं मैंने सर, मैं रिकॉर्ड लिख कर रही दिया. थी ऐसे तो ही मन में मेरे विचार आया सर. 165 से ज्यादा मेरे शिविर खत्म हुए हैं. ये तो खाली ऑनलाइन के 165 हुए हैं. ऐसे ही नेशनल अवार्ड मिला 2021 में नहीं सर, कोरोना आपको पीरियड में. डाउट ऐसे ही सर, आपको डाउट नहीं कर रही थी, सिर्फ अपना डाउट पूछ रही थी. नहीं मेरी माँ, मेरी बहन, पहले स्क्रीन को कनेक्ट हो. सब्जेक्ट खत्म हुआ क्या? मैंने क्लास खत्म की क्या? नहीं सर, अभी तो चल रहा है ना प्रोसेस. तो ट्रेन के आगे मत दौड़ो, स्लाइड के आगे मत देखो कि इसके पीछे कौन सी स्लाइड आएगी. पहले जो स्लाइड आपके सामने है उसको तो समझो मेरे बहन. जी सर. अन्य लोगों को भी मैं ये कहता हूं, अदर्स ऑल्सो आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. इट इज नॉट ओनली वंदना. वंदना की कोई गलती नहीं है. शी इज नॉट मिस्टेकन. दिस हैपेंस and it is a very very common thing happening in every workshop. So ये जिज्ञासा है, there is no problem, लेकिन please this is a system we have to follow. Now coming again, a sound. What are the sounds? a I, u, ru, rlu. ai, o, au. ai, o, au. ah. दोबारा देखते हैं. लेट अस चेक इट आउट अगेन. आ, ई, उ, रू. वन इज द स्मॉल रू. इसे काफी लोग, many of them, they pronounce this as ri. That is wrong pronunciation in Sanskritam. It can be a right pronunciation in Hindi. हिंदी में उसे री कहते होंगे, नॉट इन संस्कृत. संस्कृत में ये रू है, रू. और दीर्घ रू, जैसे कि छोटा वाला, द स्मॉलर वन, द फर्स्ट वन इज रू. ऋतु, सीजन, एटमॉस्फेयर, सीजन. सो रू, ऋतु. ऋषि, दैट इज दीर्घ, ऋषि. लेकिन लोग क्या कहते हैं?
Ritu or Rishi. That is not a Sanskrit pronunciation. It is a Hindi. It can be right in Hindi, but not in Sanskritam. So there are many genius people on YouTube who pronounce that as a Ri. So please, इसके बारे में every alphabet I have undergone, whatever I am showing has been tested, verified, very much authenticated, and then this has taken up. Okay? So please try to believe it is not Ri, it is Ru. Ru, Ru. Spashtam? A, I, U, Ru, Ru, Ru. A, O, Aha. Aha. Abhi, now this set of alphabets are now subdivided. They are subdivided. And they form, there are 4 subdivisions that you will see, and there is 1/5 one, which is not shown in this, but it is there. There is a subcategory. So let us understand the subcategories of these alphabets, and they would be now in IAST I am taking. How this A is pronounced? The A is pronounced as A. Now A. It is longer one. A. So A and a overline. Overline means dirgha. Means you have to sound it longer. A. Similarly, E. I. Small I. In IST, there are no capital alphabets. All the alphabets are represented in lower case. यानी IST में, IST के स्क्रिप्ट में सभी वर्ण जो है वो छोटे में होते हैं, उसमें कैपिटल नहीं होता. Okay, so E. So E is I. It is represented by I. So whenever you see I, it is E. For example, in English also, image. It starts with I, na? What is the sound? E. Image. Am I right? So it is E rather. E. Now dirgha wala. E. 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 A. E. E. Longer one. So I and overline. Dirgha. Similarly, U. U. U means U. 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 Longer one. Overline over U means U. Ru. When you are saying Ru, R and a under dot. R and under dot means small Ru. Now dirgha hoga to kya hoga? Same, but overline over it. Yani R under dot and having a overline. Dirgha one. Ru. 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 And similarly, Ru, that yellow alphabet is represented by L, R under dot. Because whenever you are sounding it, you are sounding with R, L and R together. Ru, Ru, Ru. So L and R under dot. Am I clear with this? Am I clear? Am I making sense? Are we on the same page? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. हमारे पुराने स्टूडेंट तो एक्सेप्ट करेंगे, नए स्टूडेंट का फीडबैक देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि सर चालू करेंगे, श्लोक पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये पढ़ाना, अरे हमारा तो क्या सीखना था, ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ऐसे हम संस्कृत कैसे पढ़ पाएंगे, आपकी मर्जी, वीडियो अवेलेबल है. हाँ, चलिए, एनीवेज आगे चलते हैं. नाउ A, I, O, O. How it is written in IAST? A is represented by E. A is represented by E. I. A, I. A and I. Small I. A and I. I. A, E. I. See, sounding na A, E. I. O.
O. That is simple. O. Ow. A and U. A, U. Ow. A, U. Ow. And this is swaraha, aha. So it can be over not only a, it can be ka, it can be da, any alphabet, and over that is called anuswar and visargaha that we will learn. So any dot above any alphabet is represented by M under dot. M under dot. And what is the sound? What is the sound? So half ma. When you say ma, you are opening your lips. Ma. But when it is half, you are closing your lips. A, Am I right? Not ama. नहीं, wrong है. ama नहीं होता कभी. होता ही नहीं है. That is a wrong sound. It is not a ma. It is half ma. So, कबूतर की आवाज, like a pigeon. Visargaha. Ha. Half her is the sound. So what is her? When you are saying her, you are pronouncing horse, her. So her निकलते वक्त, now stop the her in between. आपको बीच में अटका देना है. ह, ह. कैसे? ह, ह. This is the sound. Am I clear? Am I clear? We will go ahead. Don't worry. We are going to understand. Okay. Now, coming here, there are subcategories. These subcategories are in various, all the alphabets, what we saw just now, I have been divided into 4 categories, subcategories. They are Raswa. Raswa means short. Raswa means short alphabets. Which are those? A, I, U, Ru, Ru. A, I, U, Ru, Ru. Spashtam? A, I, U, Ru, Ru. Now the second set is Dirgha. Dirgha is long. Dirgha means long. You have to stretch a bit, like A, I, U, Ru. A, I, U, Ru. Dirgha. They are called long. Dirgha. या दीर्घ के स्पेलिंग में दी छोटा वाला है, हाँ, बड़ा वाला नहीं है. काफी लोग मुझे पूछते हैं, तो इट इज शॉर्ट वन. सो आ, ई, उ, रू. Thereafter, there is another category which is Sayukta Swaraha. Now, what is actually Sayukta Swaraha? Means two different vowels coming together to create another independent vowel. यानी संयुक्त स्वराहा किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग स्वर कैटेगरी, ओके, स्वर कैटेगरी मिलकर एक तीसरा नया स्वर बनाते हैं. स्वर हुआ तो वो इंडिपेंडेंट अल्फाबेट हो गया. जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वराहा कहते हैं. जिस कैटेगरी में आता है अ और ई को मिलाया तो ए. अभी ये ए कंप्लीट हो गया. नाउ ए इज नाउ कंप्लीट. सो अगेन एड अ विद दैट. अ एंड ए विल बिकम आई. A, I. Second example is A and U, O. A and U, O. Now that O is a complete alphabet. स्वर बन गया. उसमें वापस अ जोड़ेंगे तो बनेगा आउ, आउ, आउ. स्पष्टम वा? Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Any doubts? Yes. है? बोलो बेटा. उषा भगिनी वदतु. एकदम क्लियर सर. एकदम क्लियर. तबीयत ठीक है ना अभी?
तबीयत ठीक है ना अभी? थोड़ी आवाज अभी भी बैठी हुई है तो थोड़ा बात कम कर सर रही है। सिगरेट पीना बंद करो ना। नहीं सर सर, कभी हाथ नहीं लगाया लाइफ में। नो हाँ बोलो। अल्कोहल, नो सिगरेट। सर may I ask one question? या प्लीज गो अहेड। सर रू में रू बड़ा रू है ना, दीर्घ रू, उससे कौन सा शब्द बनता है? ऋषि। ऋषि। हाँ, ऋतु अलग है और ऋषि है। ऋषि है, ओके, हम उसको ऋषि बोल रहे थे अभी तक। और ऋषि बोलते हैं छोटे ना। वाले रू से। हाँ, ऋषि बोलते हैं। दैट इज अ रॉन्ग, बिकॉज ऋषि हिंदी में बोला जाएगा। हाँ, ऋषि। हाँ, ऋषि। हिंदी में बोलेंगे। तो ऋषि। अभी आपको एक बात बताओ, मेरी बहू का नाम ऋतु है। ऋतु। हाँ, ऋतु। ऋतु। गलती से उसको आप ऋतु बोल दो, अच्छा। वो गुस्सा करेगी। वो गुस्सा। मुझे भी नहीं छोड़ती। बोलते पापा मेरा नाम ऋतु नहीं है, ऋतु है। ऋत्विक। ऋत्विक में भी छोटा वाला बड़ा वाला ऋत्विक मराठी है क्या? हाँ, तो ऋत्विक। ऋत्विक मत बोलिए, ऋत्विक। ऋत्विक। हाँ? ओके सर, वो मराठी है आपकी? और मराठी। फिर संस्कृत नहीं होगा, संस्कृत इज द राइट वर्ड। संस्कृत, देखिए एक मिनट। संस्कृत जो वर्ड है ना, वो बहुत बहुत मिक्सचर वाला वर्ड है। इन संस्कृत बुक ऑल्सो इट कैन बी प्रोनाउंस एज संस्कृतम, संस्कृत या संस्कृत। लेकिन क्री जो बोलते हैं ना, वो हिंदी में आ गया। एक्चुअली अगर संस्कृत बोलेंगे तो आप हिंदी में बोल रहे हो, अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो संस्कृत बोलेंगे। संस्कृति को क्या कैसे संस्कृति, संस्कृति। हाँ, संस्कृति नहीं होता, वो हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे। अरे देखो, हिंदी लैंग्वेज भी तो है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके भी तो नॉर्म्स है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिंदी नॉर्म्स, इजंट इट? संस्कृति। लेकिन अगर आप संस्कृत में बोल रहे हैं, हम संस्कृतेन एव वदामि, संस्कृतेन एव वदामि, तो संस्कृत तो आपने हिंदी में बोला। हाँ जी, सही है। तो आप क्या बोलेंगे? अहम केवल संस्कृतेन वदामि। तो आप पूरा वाक्य संस्कृत में बोल रहे हैं, है ना? जी सर, जी सर। मिक्स करोगे तो इफेक्ट चली जाएगी। और यूट्यूबर्स में मैं काफी लोगों को देखा, अरे बाप रे, लोकल एक्सेंट डाल देते हैं, लोकल एक्सेंट डाल देते हैं। यू कैन नॉट इन्वॉल्व योर लोकल साउंड into something which is a different language. It is something, we are Gujaratis, I am a Gujarati. We speak all language in Gujarati. We speak English also in Gujarati. My name is Arjun. We speak Sanskrit also in Gujarati. मम नाम अर्जुन हो। बुंदेली लोग जो कैटलॉग को कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग। वो चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक्सेंट संस्कृत में मत लाइए। इफ यू पुट दैट एक्सेंट इन संस्कृतम, यू विल नॉट एक्चुअली एंजॉय संस्कृतम, बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज नॉट टू शो ऑफ। किसी को दिखावे के लिए संस्कृत मत पढ़िए। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ आत्मन, आत्मा की भाषा है। इसलिए यहां पे टाइटल पे भी आत्मा लिखा हुआ है। जी जी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आत्मा लिखा हुआ है, संस्कार। तो ये आत्मन भाषा है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ आत्मन, हम लोग जी सर, विथ विच यू कैन कम्युनिकेट, बिकॉज योर आत्मा अंडरस्टैंड्स लॉजिक एंड नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज लॉजिकल एज संस्कृतम। आगे जाके देखेंगे हम, ये 10 दिनों में लॉजिक तो ढूंढ रहे हैं, साइंस ढूंढ रहे हैं, एरिथमेटिक ढूंढेंगे, तभी आपके दिमाग में बैठेगा अरे ये 2 + 2 = 4। तो वो तो अर्थ है या मार्स पे है या जुपिटर पे जाओगे तो 2 + 2 क्या 3 बनेगा या 6 बनेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर ओवर देयर और लेस ओवर देयर। विल द नंबर चेंज? 2 + 2 = 4। वेर? अगर चांद पे जाओगे तो कितना होगा 2 + 2? If you go on the moon, what will be 2 + 2? Answer will be same. Why? The moon has a lower gravity. Will it not become 3 over there? No, sir. No, sir. Only weight decrease. No. Why? Because it is logic. 2 + 2 is arithmetic.
Am I right? Yes, yes. So you cannot, that language has a very logical sequences. That is the reason Sanskrit is the only language in the world where a student can earn 100% marks. None other language in the world, can give you 100 out of 100. It is only Latvian language and Sanskrit language. And you know the secret of Latvian language. The total Latvian grammar is Sanskrit grammar. We had a couple of students from Latvia. And when I was explaining them the basic grammar, they said, we understood. I said, how can, means you have studied Sanskrit earlier? Well, no, sir, it is a Latvian, same Sanskrit, same grammar. So Latvian grammar and Sanskrit grammar is the same grammar. Just imagine. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Going ahead. Now, Sanyukta Swaraha. A, I, O, Au. Thereafter, यानी अ के ऊपर जो बिंदी दिखती है ना, the dot that you see is not a dot. In Vedic Sanskritam, it is an alphabet. It has a sound. And what is the sound of that alphabet? As I explained. Half ma. Is the sound. So this is called Anuswaraha. Means a dot. Anuswaraha. I will be symbolizing this way. Anuswaraha. The dot over the alphabet. Anuswaraha. They fall under the category called Ayogvaha. Ayogvaha is the fourth category in which Anuswar comes. And there is one more alphabet which is that, and that is A and double dot. This again, the double dot is from Vedic Sanskritam. It has a sound. And what is the sound? Half ha. So, that is called Visargaha. Like I am saying, Visargaha. Ayogvaha. Why Ayogvaha? Because ha, a complete ha, and thereafter Visargaha will not give that immediate sound. So it is sounded as Ayogvaha. Here Visargaha. So aha. 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 कुछ योगा अभ्यास कोई लोग करते हैं क्या? डू यू ऑल डू योगा अभ्यासम? Yes, sir. You do, Yes, no? sir. Yes. So whenever you are pronouncing भ्रामरी हो रहा है, भ्रामरी Yes, sir. और जब भी विसर्ग करते हैं ह ह ह ह कपालभाति. Yes, yes, definitely. This is the secret of the language. तो just imagine, अगर महादेवन जी ने ब्रेथलेस गाना गाया था, पता है आपको? ब्रेथलेस गाना. That was a Yes, famous of Mahadevan ji. Yes, sir. Mahadevan. Yes. Very famous song. But he was breathing normally, you know. There are alphabetical orders due to which you are breathing in between. For example, if I, small one is, तूने मुझे देखा नहीं, देखा तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, अभी पहचाना नहीं, दुनिया दीवाने मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें दम, यहाँ ठहर जो मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम. I was breathing normally. Because it is not possible for a heart patient with a bypass, all three surgeries, खट खट खट, इधर से भी नस निकाल दिए, पैर से एक वेन निकाला, to speak so much. But if you understand the technique of talking, you can talk non-stop. I tell you one thing, last year, 9th November, I had a heart attack. Actually, the days were finalized from 6th of December last year. I was to take a marathon workshop in Bombay to create a world record of 108 hours of non-stop workshop. Non-stop workshop.
रजिस्ट्रेशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सब रिकॉर्ड्स भी क्लियर हो गए थे. दे हैड आस्क्ड मी फॉर सैंपल एंड ऑल दैट. तो मैंने 6 घंटे का सैंपल भेजा था कि 6 hours हाउ वी विल डू. दे सेड के फॉर मेडिकल पर्पस एवरी 3 hours you will be given half an hour break. I say I may use or may not use. They said that is your will. But non-stop 108 hours of Shibiram. How it is possible? Will I get tired? Yeah, in between maybe thirsty or hungry. So for that juice and all that there is there. But then talking wise my veins and all that, no. Breathing uncomfort, no. The reason is the language. If you understand the language and you have the script in your mind, okay, whenever I am talking, this is the time I have to breathe. I have to convert into other words. That words will give me the intake of oxygen. That is the technique what we are going to learn in this next 10 days. Are we ready? It is Sanskrit is not an ordinary language. Not at all. So don't underestimate Sanskritam. Going ahead. Now this ayogvah, this also falls under the category of ayogvah. But interestingly, visarga has different pronunciation according to the alphabet that it is attached. For example, if it is attached with ka, then it is ha, half ha. So kah. For example, balakah, balakah. Am I right? If it is attached with ka, that double dot will be ha, and that ha half. So ka ha, ka ha. But if it is attached with ka, that double dot will become ha, and that ha half. So ka ha, balakah, balakaha, balakah, balakaha. Now ka became with ha. Am I clear? Only with visarga, not with is common with all. If it is above ka, it will be come. If it is above ka, it will be kam. Kam will remain the same. Now the third example could be e. So na ke sath e joda hai. The na is attached with e. So ha will become he, because ni hai. So visarg ban jayega he. So as a result, it will become ni hi, ni hi. Kah, kaha, ni hi. Spashtam va? Am I clear? Because some people are taught in some organization in a different way. They are also right according to them, because that is slok based. So there are some other principles that come in between. But in basic spoken Sanskritam, this is the principle that it is, if it is attached with akarant, means ka comes under akar. What is akar? So ha will become akar. So ka ha. So half ha. So ka ha, ka. So this will become ha. So ka ha. Now half ha. So ka ha. It is ni. So this will become he. So ni hi. He को आधा करना है. Ni hi. Am I clear, everybody? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now going ahead, the fifth category, but that fifth category is not in the chart, but it is interestingly, it is in the category of swaraha. तो स्वर की कैटेगरी में ये आता है, लेकिन चार्ट में नहीं है, और उसे कहते हैं प्लुतः. उसे कहते हैं प्लुतः. प्लुतः मीन्स हैज अल्फाबेट एंड नंबर. देखिए, इंटरेस्टिंग. It is alphabet and number. So A attached with number 3 becomes A. So A, A, A. A, A, A.
one breath more. That is called Plutaha. So Sanskrit was the first language of the world which used alphanumeric alphabets. Alphanumeric alphabets. And there is one more language, that is Russian language, which uses alpha and numbers. So alphanumeric language. Second example, if it is attached with dirgha E, 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 E. This specially comes, Plut category comes in Stotram. Not very few of them, not even few, very, very one or two, they might come is in the spoken Sanskritam, but rest it won't come. In spoken Sanskritam, you will not find Plutaha. But we have to have the knowledge because there are conditions. Condition number 1. Number 3 is only attached, not number 4, number 5. No other number, but only number 3. And it is attached only and only with vowel. यानी नंबर 3 ही जोड़ा जाता है और नंबर 3 को स्वर के साथ जोड़ते हैं. So what you see, A plus number 3 in English is equal to A and number 3 in Devanagari. That is number 3 in Devanagari. Okay, for that please refer the videos, there I have shown. So number 3 is Devanagari. It is attached, condition number 1, it should be only number 3, and another condition, it is attached only with the vowel. स्वर के साथ ही जुड़ता है, वो अन्य किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, यानी व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता, केवल स्वर के साथ जुड़ता है. And third example is O. तो O. The best example बताओ इसका. ये जो ओम दिख रहा है, ऊ अर्धचंद्र वाला, that is the वैदिक स्पेलिंग ऑफ ओम. वैदिक स्पेलिंग यानी इसका वैदिक में इस तरह से लिखा जाता है, वैदिक संस्कृत में. लेकिन जो हम देवनागरी संस्कृत पाल रहे हैं उसे ओ प्लुत और म हाफ इज जो अनुस्वार का था, द साउंड. Excuse me, sir. एक सेकंड, कैन यू हैव पेशेंस? व्हाई यू वांट टू ब्रेक मी व्हेन आई एम प्रोसीडिंग? Yeah, go ahead now. You have already broke my concentration. Go ahead. मैंने सुना है कि ओम जो है तीन अक्षरों से मिलकर बना. वो मैडम मुझे नहीं मालूम. हाँ, sorry. I don't have that much of knowledge. What knowledge I have, I am taking it up. It is up to you to take it or justify it. हाँ, मैं इसको समझाने तो दीजिए मुझे. ओ रू कुछ निकालते हैं, पता नहीं है how they come to that. But ये ओ is a प्लुत. तो ओ and half m. ओम. That is the Vedic spelling. आप लोगों को जानकारी है क्या about आर्य समाज? How many of you all know about आर्य समाज? आर्य समाज के बारे में जानते हैं ना? तो आर्य समाज don't write वैदिक ओम. उन लोग ये देवनागरी स्पेलिंग लिखते हैं. इफ यू हैव सीन, अगर आपने देखा होगा उनके लोगोस में या किधर भी ओम लिखते हैं, दे राइट इट इन देवनागरी स्पेलिंग विच इज द राइट स्पेलिंग. तो अगर कोई कहता है कि इट इज फॉर्म ऑफ 3 अल्फाबेट्स, 3 वर्ड्स एंड ऑल दैट, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट. एंड इट इज नेवर एवर प्रूव्ड इन एनी ऑफ द ग्रामर बुक्स. In none of the grammar book is this been mentioned in that way. Am I clear, Hema ji? Okay, sir. None of the grammar book. And please don't, when the flow is there, don't pitch in between. Let me wait and then you can say, na? Okay, sir. No opportunity to say, na? Then, because it breaks the concentration and it breaks the link. There is no script written, na? ये जो भी पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं. So it is spontaneous. जी सर. In that, if you put directly आके, आपका दिमाग फास्ट क्यों दौड़ रहा है? Why don't you give your time to at least see and understand what I am explaining? This will not help you to learn Sanskritam at all. You have to change
योर वे ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी तो ही आप संस्कृत पढ़ पाओगे। अगर आप स्लाइड आने के पहले ही आपके दिमाग में अल्लिया दूसरे सब स्लाइड आते हैं, अच्छा चलिए कोई पिक्चर देखने गए और एक मूवी देखते समय दूसरे मूवी का सब मूवी फिल्म का मूवी का स्टोरी एक ही रहता है, तो क्या एक दूसरे से मिलोगे तो एंजॉय करोगे क्या फिल्म? अरे उसमें भी यही दिखाया था, उसकी भी उसमें उसके बाद ये हुआ था, इसमें भी देखो यही होगा, ऐसा करोगे क्या? विल एनीबडी एंजॉय दैट मूवी? व्हाई? आई एम सॉरी हेमा मालिनी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रूड टू एनीबडी, आई वांट टू हेल्प यू। सर सर प्लीज, मेरा नाम हेमा मालिनी नहीं, हेम नलिनी। सॉरी हेम मेरा नलिनी। एम नलिनी, सॉरी। वहां पे एक छोटे अक्षरों में लिखा है ना, इट इज जी जी रिटन क्वाइट स्मॉल, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, सो इट इज बेटर स्वामी। हाँ, सो स्वामी आई टेल यू, स्वामी इज बेटर। हाँ, तो आई टेल यू वन थिंग स्वामी, कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, जी बट जी सर जी, समझ गई। don't go for, don't mix something else. It is three alphabet, three different alphabet. Who is, none of the grammar book has ever shown that. Okay, sir. Not even in Patanjali Sutra, not even in Astadhyay. How these jokers, they come up with such things, I don't understand. And there are people who pronounce oh ma, oh ma, oh ma. It is not a ma. When you say ma, you are parting the this thing. You are wasting the energy because they don't know what is the energy science behind pronunciation of the alphabet, which we will learn ahead. तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, कल हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में, उसके बाद मैं हर एक अल्फाबेट का आपको हर्ट्ज काउंट दूंगा। एवरी अल्फाबेट हैज अ एनर्जी काउंट एंड दैट विल बी फ्रीक्वेंसी काउंट जिसे कहते हैं, दैट काउंट आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। सो टुमारो राइट टाइम पे सब लोग लॉग इन कीजिएगा, बिकॉज आवर क्लासेस डायरेक्टली दे स्टार्ट एट 3 o'clock. Now one more announcement is I will be taking 1 or 2 days till Varnamala. I will be taking this batch. Thereafter, Snehal Vyas, my wife, will be taking over. She is quite cute and she is MA in Sanskrit. And there are Bina Damani is also here, so she is also her friend. But yes, she has a lot of patience and a wonderful way of teaching, different than what I am teaching. Okay, so enjoy regarding that also. Thank you, sir. धन्यवादः। श्वः मध्याह्ने 3 वयं सर्वे पुनर्मिलिष्यामः। अस्तु, शुभं भवतु, सर्वतः मंगलं भूयात्। Here I end my YouTube